शुभं करोति कल्याणम् आयुरारोग्यसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपमादेव्यै नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि दीपदेव्यै नमो नमः। घण्टानादम् आगमार्थं देवानां गमनार्थं सुरक्षसां गुरवेरन्दारवं तत्र दिलाह्वाननाञ्जलं गण्डः स्थिताय गरुडाय नमः। गरुडवाहनाय नमो नमः। ओम inside on top of the counter behind you, behind you, behind you, behind you, behind on the counter, behind you. You got it? Or maybe on top of the no. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणानायम्य। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों तदेव लघनं सुरिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवनं तदेव लक्ष्मीपते गौरीपते ते अङ्घ्रियुगं स्वरामि। शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत्पन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोकान्तर्गत उत्तरअमेरिकाखण्डे कैनडादेशे एजाक्सगरे सङ्कटमोचन श्रीहनुमान् मन्दिरे शुभे दिनशोभने मुहूर्ते लोकाः समस्ताः क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्यविजयायुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभिसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत रामचंद्रप्रीत्यर्थं श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज प्रीत्यर्थं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रीत्यर्थं अद्य हम महागणपति पूजनम श्री पंचमुखी हनुमद्बिंब अभिषेक आराधन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पूजनम च ततः श्री रामचरितमानस कथा श्रवणं च हम करिष्ये इति संकल्प्य उपस्पृश्यात् गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनापुमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदभिस्तेन साधनम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि पाद्योः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः यशेम देवहितैयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गंधान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि उपरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। अर्चना कृत्वा हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम्।
ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोदरस्य गर्भैशापद्भ्यागं शूद्रो अजायत धूपमाघ्रापयामि दिव्यमङ्गलदीपम् ॐ चन्द्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत मुखारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि नैवेद्यम् ॐ प्राणी स्वाहा परि स्वाहा व्यानि स्वाहा उदानि स्वाहा समानि स्वाहा ब्रह्मणि स्वाहा ब्रह्मणमात्मा महानिवेद्यं समर्पयामि ॐ कदलीफलानि महानिवेद्यं समर्पयामि प्राणे स्वाहा परि स्वाहा व्यानि स्वाहा उदानि स्वाहा समानि स्वाहा ब्रह्मणि स्वाहा ब्रह्मणमात्मा महानिवेद्यं समर्पयामि द्रव्यरक्षणां समर्पयामि अत प्रार्थना ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् यस्य द्विरिर्भक्ताद्याः पारिषद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रये महागणपते नमः विश्वक्सेनाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि बोले श्री गणेश भगवान की जय वीर हनुमध्यानम् ॐ श्री रामचंद्र ध्यानं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वमुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं पंचमुखी हनुमध्यानं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वीरहनुमते नमः ध्यायामि आवाहयामि पंचमुखी हनुमते नमः आसनं समर्पयामि ॐ वीर हनुमते नमः पाद्योः पाद्यं समर्पयामि ॐ रामभक्ताय नमो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि रामदूताय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि आञ्जनेयाय नमः शरीरे स्थानं समर्पयामि अथ दुग्धमहास्नानम् ॐ पंचमुखी हनुमते नमः दुग्धमहास्नानं समर्पयामि आइए आफ्टर वन स्पून नाम पंचमुखी हनुमान जी सशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगम् उतामृतत्वस्येषानः यरण्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागिश्च पुरुषः पारोश्च विश्वाद्भूतानि द्रपादस्यामृतं दिवि द्रपादोर्ध्वोदेत् पुरुषः पारोस्य हार्धवात् पुनः साजनानि शनि अभि तस्माद् विराड् जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अच्छरिच्यता पश्चात् भूमिमथो परः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीराजं ग्रीष्म इदमशरद्रविः सप्तास्यासन् भरदयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं वशं तं यज्ञं वजिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋषयश्च ये
तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं विशुराज्यं पशुगिष्टाविष्टक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्रये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जग्निरे छन्दागंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मारजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादत गावो जग्निरे तस्मात् तस्मा जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यरदुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुतरस्य द्वेषः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीरन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यो समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवरण्यरास्तेत् धाता पुरस्ताज्जमुराजहार शक्रप्रविद्वान् परिशस्य तमेवं विद्वान्नमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानश्च जन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय। अथ अर्चना। ओम रामाय नमः। ओम वीर हनुमते नमः। ओम पंचमुखी हनुमते नमः। ओम रामभक्ताय नमः। ओम वीर वीराय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम सीताशोक निवारणाय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम लंका विध्वंसिने नमः। ओम रुद्राय नमो नमः। ओम अर्जुनमित्राय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। सीतादेव्यै नमः। लक्ष्मणाय नमः। वीर हनुमते नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम तुलसीदास ज्ञानम्। ओम सीतानाथ समारंभाम् श्री तुलसीदास मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। तुलसीदास महाराजाय नमः। ध्यायामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। शरीरे स्नानं समर्पयामि। ओम यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्यो जमृतात् सम्बभूव समीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये देवी स्वस्ति नस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु दुपरे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। धूपदीप महानिवेद्यम्। ओम वनस्पतिर्सोद्भूतो गन्धोत्तमाः गिर्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपमाघ्रापयामि माचमनीयं समर्पयामि। दीपम् तं वहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिपरापः। मंगलदीपं दर्शयामि सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय श्री गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु
गुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि। नैवेद्यम् ॐ नाभ्यास्तिरन्तरिक्षं शेषणाभ्यां समृतापद्भ्यां श्रोत्रात् तथा लोकाः विकल्पयन् ॐ प्राणे स्वाहा परे स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ॐ महानिवेद्यम् इदं फलं मया देव सा ब्रह्मरुद्रस्तवा तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। ॐ प्राणे स्वाहा परे स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा समाने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणमात्मा महानिवेद्यं समर्पयामि। ॐ कीर्तिनामदेवस्य ॐ जनकुमारनामदेवस्य महानिवेद्यं समर्पयामि। हनुमते नमो नमः। गोस्वामी तुलसीदास देवाय नमो नमः। ॐ वामेश्वीच निवेद्यं समर्पयामि। प्राणे स्वाहा परे स्वाहा व्याने स्वाहा उदाने स्वाहा समाने स्वाहा ब्रह्मणे महात्मा महानिवेद्यं समर्पयामि। वीर हनुमते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ अतनीराञ्जनम् ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ गोस्वामी तुलसीदास देवाय नमो नमः। हनुमते नमो नमः। कर्पूर आरार्तिक्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। सर्वरक्षान् धारयामि। अथ प्रार्थना बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हनुमते नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सकलाराधनैः सुवर्चितम्
ब्रह्मा तेरो नाम, सबको संमत दे भगवान। ईश्वर ब्रह्मा तेरो नाम, सबको संमत दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हनुमान के मुख से निकला जय राम जय सिया राम। हनुमान के मुख से निकला जय राम जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद सुंदरम। पटपीत मानव तरिंत रुचि शुचि नोमि जनक सुतावनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर
संग्रामजित खर दूषणम श्रीराम 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 भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकंदनम रघुनंद आनंद कंद को शलचंद्र दशरथ नंदनम श्रीराम 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 इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमलरञ्जनं मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खलदलगञ्जनं श्रीराम 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 मनुजाहिराचे मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान सीलो स्नेह जान तरावरो श्रीराम 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 एहि भाति गौरी असीस सुनी सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्रीराम 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 श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम श्रीराम 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 राम श्रीराम श्रीराम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। सबसे पहले हम सब मिलकर श्री हनुमान चालीसा गाएंगे। टुगेदर विल सिंग हनुमान चालीसा। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सो मेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। भक्त जनों, this is one of the most invaluable prayer or pratna Tulsidasi composed. Shri Hanuman Chalisa is sung by people in all parts of the world, in all different languages, in Tamil, Telugu, Malayalam, Gujarati, Punjab, all different languages. Our friends Hindus in America sing it as well, North America, Europe, around the world. These are Caucasian Hindus. They also sing Hanuman Chalisa. It is one of the most popular prayer for Hindus. Every Hindu must know this prayer by heart. And this is a beautiful composition of our
Dear Goswami Tulsidas Ji, this is his legacy to humanity. Shri Guru Charan Saroj Raj. We bow to him today as our Guru. Jai Hanuman Gyan Gun Sagar, Jai Kapis Tehu Lok Ujare, Ramadut Yatulit Baldhama, Anjali Putra Pavan Sutnama, Mahavir Vikram Bajrangi, Kumati Dvar Sumati Ke Sangi, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, गोपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पद जानु, प्रभु मोद्रिका मेरी मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमय अनुग्रह तुम्हरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साध संत के तुम रखवारे,
असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। So Bhaktajano, as you know, today is Goswami Tulsidas Ji Jayanti. He is such an important Mahatma or Sant in our tradition because of his contribution, his invaluable contribution to Sanatana Dharma, mostly to the Hindi-speaking world. He composed the Ramcharitamanas. Ram, not Charitra, but Charitamanas. बहुत लोग रामचरितमानस बोलते हैं, गलत, रामचरितमानस, चरित्र भी ना आता है, वो चरित्र. So he composed it in very simple language, Awadhi, dialect of Hindi. And just a little of his background, he was born in 1532 CE, and this is Samvat year in our Hindu calendar, 1589, in Rajpur, Chitrakoot in Uttar Pradesh. His father was Surya Priya Brahman, and his father's name was Atmaram Shukla Dubey. His mother was Hulsi Devi. But at the time of his birth, they said, astrologers told him at the time of his birth, he born on according to the astrologer, an inauspicious nakshatra. So they gave him up for adoption from a young age. And immediately after he was adopted, his mother passed away. His mother was Hulsi Devi, she passed away. And then he couldn't support himself. For 5 years he started begging to support himself. Then he met his guru. His guru was such an important part in his life, a transformation in his life when he met his guru. His guru was Narhari Das. His guru took him in the ashram and taught him Shri Ramcharitamanas, the Katha of Ramji. After he grew up, after studying in the ashram, he got married to Buddhimati, who is commonly known as Ratnavali. And there's a beautiful story about his lifestyle when he got married. When he got married, he was so much fascinated with his wife, so much in love with his wife Ratna Devi, that one day she left and she went to her parents' home to visit her parents. And it was in the monsoon season and it was pouring rain.
So much love Tulsidas ji had. As a matter of fact, his name was Ram Bol before. His name, before he got the name in Gurukul Ashram, his Guruji Nar Haridas gave him the name Tulsi, and he became a Mahatma, and Das is added. When he became a Mahatma, when the person takes sannyas, when he took sannyas, he got Das added, a servant of Tulsi Devi. So Ram Bol was his name. As a matter of fact, the first thing came from his mouth was Ram. The first shabd came from his mouth, the first word. So Ram Bol was his name. So much in love with his wife, then she turned to him and she said, if you have a fraction of this love for Bhagavan Sri Ram, you will immediately attain moksha. And those words were priceless, and to some extent they hurt him. You know, every saint had a past, some situation in the past that transformed their life. One statement, this statement from his wife transformed his life, and he decided to dedicate his entire life afterwards to serving Ramji. So he already received Diksha from his Guruji Nar Haridas, and he learned about Sri Ram's Katha, and he decided to put this little knowledge into practice. So he composed, many, made tremendous contribution to Awadhi and Hindi poetry. Of course, the Ramcharitamanas, the Hanuman Chalisa we talked about that. Vinay Patrika is also one of his work. Kavitavali, Gitavali, Krishnavali, these are some of his contribution to humanity. He passed away in 1623 at Asighat in Varanasi at the age of 91. 91 years old he passed away. So my friends, this is the contribution of Goswami Tulsidas Ji. When he composes Ramcharitamanas, he composed it on a Ramnavami day, and it was on a Mangalwar. Tulsidas Ji writes, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Naumi Bhami Bas Madhumasa, Naumi Bhami Bar Madhumasa, Avadhapuri Yah Charit Prakasa, Avadhapuri Yah Charit Prakasa. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Jahi din Ram Janm Shruti Gavahi, सकल तहा चल आवही. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. So we composed Ramcharitamanas on a Tuesday in Ayodhya Ji, and we were told on Ramnavami Day, all the Tirath, all the sacred places, all the sacred rivers, sacred locations in the entire Bharatvarsh go to Ayodhya Ji. So if you can't visit Dwadash Jyotirling, you can go to Mathura, Kashi, all of these sacred places. Ayodhya जाइए, रामनवमी के दिन पे जाइए, सब तीर्थ वहाँ चले आए. These are the words of Swami Tulsidas Ji. Now, he composed the Ramcharitamanas, but like every great Santa in the tradition of Sanatana Dharma, they don't take credit for their work. आप बता सकते वेद किसने लिखा?
The rishis don't write their name. Time and again you will find the name of Tulsidas ji. But first he attributed the credit to Bhagwan Shiva. Rachi Mahes Nijaman Sarakha. That is signature. Why? Then we look at the meaning. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Gaye Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Rachi Mahes Nijmanas Rakha रची महेश जिय मानस राखा पाई सुसमय सिवासन भाषा पाई सुसमय सिवासन भाषा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम Shri Ram Jai Jai Rama Rachi Mahesa Nijaman Sarakha. So first Bhagwan Shiva consumed this katha of his Ishtadevata. Ram ji ki Ishtadevata kaun hai? Shiva Bhagwan. Shiva Bhagwan ki Ishtadevata kaun hai? Ram ji. Ram Ishwara, Ram Ishwara. There is no difference. Ek hi. But yet we find there's some competition sometimes between Shaivas and Bhakta. मेरा भगवान सबसे अच्छा है. शैव बोलते हैं वैष्णव मेरा भगवान सबसे अच्छा. ये तो गलत है. There's competition on devotees of Shiva Bhagwan and Vishnu Bhagwan sometimes. People argue over nothing. No need to argue about these things. Still they cause some contention sometimes. So Bhagwan Shiva consumed this Ramcharitamanas and he kept it in his heart. Pai Susamaya Sivasana Bhasa. And at the appropriate time, Bhagwan Shiva conferred this katha, that is Ramcharitamanas, to Siva, Parvati Devi. And then from Parvati Devi ji, we have 4 conversations. Time and again you will find Bhushundi, Dijkwashimshikha, Bhushundi and Garud. That's one conversation. Tulsidas and the saints and sages is the second one. Yagya Bharadwaj is the third one. And Shiva Parvati Samvad, Char Samvad in Ramcharitamanas. So my friends, this is the invaluable contribution of Goswami Tulsidas ji. And as we celebrate his Jayanti today, we bow to his lotus feet. And some Mahatmas, संतों के मुंह से सुना था that he is an incarnation of Valmiki ji. I've heard from saints and sages that Valmiki ji came as the avatar of Goswami Tulsidas ji because सबको संस्कृत नहीं आते. No, very few people know Sanskrit. So the original Ramayana was composed, सब जानते हैं, by Adi Kavi Valmiki ji. Adi Kavi, the original poet. But then in Kashi at that time, again, Santo ke muh se suna, I heard from saints and sages that when Tulsidas ji composed this Ramcharitamana in Awadhi Bhasha, he went to Kashi. Kashi बहुत बड़े विद्वान रहते थे. All these Sanskrit scholars are in Kashi. And they forbid him to place that shastra. He wanted to place it in the mandir, Kashi Vishwanath Mandir, to receive the kripa of Bhagwan Shiva. नहीं जा सकते. You can't get in there. And at that time, no other work was composed in any regional language, only Sanskrit. So we have Vedic Sanskrit, and then after that we have classical Sanskrit, a simpler version. Puranas, Bhagavad Gita, Mahabharata, they're written in Kalidas, all of those compositions written in classical Sanskrit, a simpler version. So these sadhus, these Mahatmas in Kashi said, अंदर जाना मना आपके लिए नहीं जा सकते. अपनी पोती आपके पास रखो. Keep your book with you. They didn't allow him. As a matter of fact, someone shared in social media the actual pictures of those chaupai that Goswami Tulsidas ji composed. It was a special blessing to look at them with his own handwriting. It was such a special blessing to see, because हमारे परम guru hai. Because of him, we learn a little bit of Ramji's katha.
Whatever he says, हम लोग तोता का समान बोलते हैं, we repeat like a parrot. सब कथाकार ऐसा करते हैं. So they stopped him to place his book, and then eventually convinced them. So what they did, they took the Vedas, Puranas, they stacked them together in front of the Murti of Bhagwan Shiva. And they placed his book at the bottom, his Ramcharitamanas. Sabse niche they placed his Ramcharitamanas. And on top of that, Puranas, Upanishads and Vedas. They closed the mandir door. And no one is to open the mandir until next morning. If Bhagwan Shiva approves of this Shastra, he will show some sign. Tulsidas is Shraddha Bhagwan. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Namah Shivaya. His Shraddha Bhagwan was so strong. He knew that Bhagwan, when you have total faith in Bhagwan, you surrender to Bhagwan, somehow that strength comes that you will be successful. Nothing can stop you. He had the firm Shraddha that he will be successful. So he didn't worry. He went home. He prayed. Prabhu, सब कुछ आपके शुभ हाथ में है. क्या करूं, मैं आपका दास हूं. And the very first Sorta he composed in Ramcharitamanas, we'll sing that first, after which we look at the answer. What happened? Remember his Shastra, his book, Ramcharitamanas, was placed at the bottom. Every other scripture was placed on top. He went home and he prayed. जो सुमिरत सिद्धि होई रामा. हमारे दादाजी परदादाजी यूपी गाते थे, इंडिया से गाने गए, त्रिनाद गए, ऐसे गाते थे. This is all for prince who sing when they left UP and went to Guyana, Trinidad, and other parts of the world. Because of those Mahatma, we have Ramcharitamanas. आजकल up to today, the flag of Sanatan Dharma, Hanuman Jhanda, is flying in Guyana, Trinidad, Suriname, around the world, Fiji, around the world. जो सुमिरत सिद्धि होई रामा, जो सुमिरत सिद्धि होई रामा. गणनायक करीवर बदन, करीवर बदन, करवो अनुग्रह सोई रामा, करवो अनुग्रह सोई रामा. बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, शुभ गुण सधन, मूक होई बाचाल रामा, मूक होई बाचाल रामा. पंगु चढ़ै गिरिवर गहन, गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल रामा, जासु कृपा सो दयाल रामा. प्रभु सकल कलिमल दहन, कलिमल दहन, नील सरोरोह श्याम रामा, नील सरोरोह श्याम रामा. अरुण तरुण अरुण बारिज नयन, बारिज नयन, करऊ सुमम उर्धार रामा, करऊ सुमम उर्धार रामा. सदा क्षीर सागर शयन, सागर शयन, बंदव कुंद इंदु समदेह रामा, कुंद इंदु समदेह रामा. उमा रमन करुणा अयन, करुणा
नयन जाहि दीन परने रामा जाहि दीन परने रामा करो कृपा मर्दन मयन मर्दन मयन बंदव गुरुपद कंज रामा बंदव गुरुपद कंज रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि नर रूप हरि महामोहतम कुंज रामा महामोहतम कुंज रामा जासु वचन रवि कर निकर रवि कर निकर जो सुमिरत सिद्धि होई रामा जो सुमिरत सिद्धि होई रामा। ऐसे गाते थे हमारे पूर्वज झांझ के साथ, ढोलक और झांझ के साथ. This is how they used to sing for hundreds upon hundreds of years. This is how we preserve Ramcharitamanas. So all the pandits were waiting. नींद नहीं आती थी. No one could have slept that night. Everyone was anxiously waiting to see if there is some sign where Bhagavan Vishwanath accepted Ramcharitamanas. And to their surprise, when they came the next morning, Har Har Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev. When they went there, the book that was beyond the bottom, Ramcharitamanas, was placed on top of every other Shastra. And the Trishul was there. Satyam Shivam Sundaram was written there. Likha. So Bhagavan Vishwanath placed his stamp, his Trishul there, and sanctioned that Ramcharitamanas will be a Shastra for Hindus from there and then, aaj tak. ये तो बोले बाबा की कृपा. और हमारे गोस्वामी तुलसीदास की श्रद्धा. He had tremendous faith by placing that Shastra there. He knew that Bhagavan. And Bhagavan never disappoints his bhaktas. So my friends, this is in essence the life and the contribution of Goswami Tulsidas Ji. He also in the 16th century established Hamari Chota Sa Mandir is named after the first mandir he established was Sankat Mochan Hanuman Mandir in Varanasi. I was privileged to visit that beautiful mandir in 2018. So he established this mandir in the 16th century. Aaj tak that mandir is there. And there's so many other mandirs named after Sankat Mochan Hanuman Mandir. And when did he establish the mandir? When he received the darshan of Shri Hanuman Ji. Boliye Ramachandra Bhagavan ki jai, Pawan Sutta Hanuman ki jai. Sakshat, he saw Hanuman Ji appeared before him. Then he dedicated this mandir to Shri Hanuman Ji. Hanuman, 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 Ram Dulare, tu न संभाले, tu न संभाले तो हमें कौन संभाले. हनुमान महावीर, हनुमान राम दुलारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले. मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले. तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले. हनुमान
दुलारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले मैं कौन संभाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमने कहा 7 बजे तक सत्संग होगा, 7 बज गया ना। आरती प्लीज, आरती के लिए आरती करेंगे, आरती जलाइए प्लीज। श्री राम जय जय राम। ओम आंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम यह शोकवह्निं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव दाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। गोष्परीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मनं, वन्दे नीलात्मजं, वन्दे नीलात्मजं। श्री राम जय जय राम। निशान जी रामन की आरती स्क्रीन की ओर देखिए, वी विल ऑल फॉलो द स्क्रीन, वी डू रामायण। आइए खड़े हो जाइए, आइए आरती करेंगे, सबको चाहिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारा अंश समत सब हीति। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आवत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी, काघव शुंभि गरुड़ के नीति। आरती
आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हर निधि शैल सती, कलिमल हर निधि शैरस पीने की। भग सिंगार मुक्ति जुबती की, गलन रोग भव मोरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति खलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की। अंतिम प्रार्थना, हाथ जोड़िए। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ यो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जगदम्बे मैया की, गौ माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आरती और प्रसाद लीजिए।